Hello and good afternoon. Welcome back to the 33rd edition of the Water Series webinar on Kazrain campaign presented by the National Water Mission Ministry of Jal Shakti Government of India and organized by APAC News Network. This is the 33rd edition, as I was saying, edition where we focus on the best practices of various districts for last almost 2 years. Almost every Saturday we are having this knowledge sharing platform but the best of the practices can be discussed and deliberated upon to make the blueprint for future for water conservation and water management. And like all other editions we have with us, the keynote speaker will be the guiding force for this edition to all of us. We welcome Debashree Mukherjee, Senior IAS Officer, Additional Secretary and Mission Director of National Water Mission, Minister of Jal Shakti, Government of India. We welcome you, ma'am. Thank you so much for your time today. We are also joined by Mr. Sanjay K. Khatri, District Magistrate of Prayagraj from the state of Uttar Pradesh. We welcome Mr. Sanjay. Thank you so much for joining us today. We are also joined by Mr. Sandeep GR, District Magistrate from the state of Madhya Pradesh of Chhatarpur. We welcome Mr. Sandeep. Thank you so much for joining us today. We're also joined by Ditimoni Pegu. She's the CEO of Majuli Zila Parishad from beautiful state of Assam. And we're also joined by Mr. Vivek Bhatt, Technical Director of WALMI Bhopal. With this, not taking much time, I'll request Debashree Mukherjee ma'am to share her thoughts on this webinar series and her opinion on why this is being organized. Over to you, ma'am. Thank you so much. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So welcome to all of you, and I'm so pleased that all of you could join us for this session. The reason why we have this workshop, the reason why we have these discussions is very, very clear. Now, I will not dwell upon the fact that we have a water crisis on our hands. I mean, with climate change, the climate change affects the water crisis significantly. We are seeing longer drought periods. We are seeing more intense temperatures across the country, and we are also seeing more intense periods of precipitation. So actually, while we may have the same amount of water, we will not have water available when we want it and where we want it. So same areas can have droughts and floods at the same time, at different times in the same year. So therefore, to mitigate climate change, to ensure that water is available for development, also for the poorest and the most marginalized, we need to do better water management. And this, I think, is becoming embedded, particularly in the consciousness of all our administrators as we go forward. All of you know, I think, that the Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign is a means of trying to make as much use of the rains as we can. It's preparing for the rains, and it's like, what we would really like is that this becomes a part of our routine in our houses. Before a festival, we clean our house, we prepare our house for a festival. Similarly, before the rains come, we need to prepare ourselves to receive the rains, to make the most of the rains. So this is the spirit of Catch the Rain campaign. You're aware of what the activities are. Rainwater harvesting structures, ensuring that all your water bodies are clean, they're desilted prior to the rains, to ensure also that all water bodies are mapped. They're entered into the revenue records, because if water bodies are not mapped and entered into the revenue records, they have a habit of disappearing. And this, by mobilizing the community, because the Prime Minister keeps telling us that water needs to be everybody's business. Water needs to be in everybody's consciousness. So this is also the spirit of the Catch the Rain campaign. This year, and there are some people from UP here. There is somebody from Majuli. If you have springs in your area, spring shed mapping and spring shed management is a major area of focus. So
the discussions that we have today is actually sharing what all of you are doing in the field. All of you are working for water conservation and management in different ways. And these discussions actually help us learn quite a bit, which we can share with other districts, other states, but also it helps inform policy at the national level. So I can't emphasize how important these discussions are. What I learned from you, I take forward to with the state nodal officers of different states during discussions with senior principal secretaries of your states and other states. Also, we are in conversation with the academy to use these discussions for training material for younger officers. So, over to all of you now, and I'm very, very keen to hear about your experiences. Thank you. Thank you so much, Debashree Mukherjee, ma'am, for guiding us and showing us and setting us the context of this webinar series and how it is going to help uh, people at large, because the whatever deliberations being made here will help in policy formulation for future. That is very important, and that is why this webinar series is very important, where the best of the practices are discussed. What are the opportunities? What are the challenges? What can be incorporated in other districts so that that kind of blueprint can be made. Thank you so much, Debashree Mukherjee, ma'am, for your thoughts. So I'll request all of you that Mr. Sandeep GR has a meeting at 4. So with all your permission, if we have the presentation by Mr. Sandeep GR first, and then we can follow the sequence. So we have with us Mr. Sandeep GR, District Magistrate of Chhatarpur, Madhya Pradesh. Over to you, sir. Good afternoon, respected Mukherjee ma'am, dear colleagues. I think the presentation that I was planning has been given a good start by ma'am. She's almost covered most of the issues that we have in our presentation. So I get a feeling that ma'am, the thought process and the field is quite linked currently, ma'am. You've kind of elucidated quite a few points that we face at the field level, and that is being discussed. Ma'am, I would just like to start the presentation. Next. This is a brief of Chhatarpur that we've tried to just put across, ma'am. And Chhatarpur is famous for the ancient Khajuraho temples, and our Panna Tiger Reserve. In fact, soon the Ken Betwa link is also being slated to happen in our region here, ma'am. And we have a lot of tourists. We have quite a few water bodies like the Bhimkund, which is being tried. They've tried to measure the depth of it, which is yet to be measured. So we have a rich culture and heritage of Chhatarpur, and several such. I'm going with the theme water bodies too, along with that as well. We have a population of around 17 lakhs. 77% of ours is rural. We are predominantly a rural district map, and most of our population depends on agriculture. Next. So this is some of the news articles for which Chhatarpur is generally in news for. So we almost every day, every morning, the newspaper cuttings or articles in my own local newspaper also are about how we are having issues of facing drought-like situations, especially now. And it started happening in April, May, and it's going to only deepen now as we go ahead. And these are the news articles that we face day in and day out, man. Next. Some of the challenges that I just wanted to start off with is essentially even the water that is being used, the issue of reuse or trying to ensure that that water is managed after it is being disposed of from the households is a major concern, especially in the urban areas. We have 15 urban local bodies in us, and even all our gram panchayats. Essentially, we have this massive campaign where we build cement concrete roads across all of our villages, all our cities. We have these drains
but all of these black water and grey water is not essentially managed properly, and there is also a lack of kind of a technical know-how as to how to use them. I mean, some methods that we are using now are basic soak pits, but some cost-effective sewage treatment plants or even for kitchen water management is one of the challenges that we face to ensure that it's implemented on a large scale across cities and across villages. Ma'am, in all the cement concrete roads, due to all the CC roads, water percolation is essentially just stopped in these places, and this has been one of the major challenge. The storm water drains even in the cities or even in the villages. So essentially, in the villages now, the storm water drains are not merely storm water, but they're also getting the black and grey water from the households. Whereas in the cities, uh, we need to essentially tap water at stormwater at various levels and ensure they percolate into the ground by tapping them at multiple levels. That is something which needs to go into the design, especially in designing of colonies. Because right now, if any colony is designed, we see roads are being made, stormwater drains, electric pipelines, and that's it. Rainwater, as such, is limited to households per se, but if that is extended to the community and maybe in stormwater drains and even in parks, that will have an increased impact. Is a challenge that we wanted to put over here. The catchment areas of all urban, like a major problem we saw in urban lakes and rejuvenating these lakes. We started off first, we thought about de-weeding them. Then somebody said, no, we need to de-sludge it. Then we realized that all the sewerage is coming into that. Fine, we are planning on creating STPs, but then the major area is how the catchment area is essentially encroached upon and how to ensure that these are free. Because generally, any lake rejuvenation project just thinks about desludging or maybe desilting. But the real catch is in ensuring that this catchment area is freed and a free flow is there. Essentially, ma'am, we have water known in our in this area in Bundelkhand, water known as Chandel Kalin Talab. So we have lakes of 200 to 50 years old. So they've been designed in a cascading manner where water overflows from one lake and goes to another lake, and then it gets held up there. But due to encroachment over the time, this is somewhere affected, and that is affecting our catching the rain, so as to say, euphoric. Next. Ma'am, this is the measures that we are planning to take to tackle the water crisis. Conservation of water. We are having several farm ponds, khet talab, we call it locally. So we're digging up a lot of khet talabs. We are ensuring stock dams, rainwater harvesting structures, and even the continuous contour trenches. This is somewhere along the lines of conservation of water. We also realize that if we need to make the rain stay, or if we want to have rain, we need to have afforestation. Hence, we are planning on massive afforestation. We are planning here on fruit forests. We are trying to create fruit forests so that it also acts on mitigating or tackling the food security issue, especially in urban areas and even in rural areas. Community participation is something we are working on, ma'am. As you already pointed out, we are holding Jal Chopals, and even in the urban areas, we hold particular camps for Jal Samasya Nivaran, so that people realize that we are not holding generic camps. Like it's not a generic Samadhan camp. It's only a Jal Chopal, only a Jal Samasya Nivaran camp to kind of activate people to know that this is the issue that we are dealing with. Ma'am, rejuvenation of water bodies, provision of safe drinking water, and construction of new water bodies. I will just explain as we go ahead in the next slides. Next. These are some of the farm ponds or the khet talabs which have a good demand in this area, where we have already constructed 5,224 such khet talabs. We are also working on stop dams and check dams. We realized there was one issue in our stop dams where the gates were getting stolen. So we realized that permanent structures are more like it, because
it was a challenge that was being faced. We needed during the rains, we wanted to open those gates because the farmers on the adjacent agricultural lands wouldn't get inundated because of that. But we realized because these gates were being stolen and the structures were then becoming useless. So we're now going in for permanent structures and a good wastewater or overflow structures where water can go by the side. That is some design change that we worked on. Next, we work next. We're working on rainwater harvesting structures, ma'am, under the Jal Shakti Abhiyan. We have 493 of our government structures have rainwater harvesting. Next. And this is one of the things that we are trying to project is in all our lakes, and we've realized that essentially once we go in for lake rejuvenation, so a JCB goes and right in the middle of the lake it makes a scoop out, and then we start digging right in the middle because that mud is more is very fertile, and hence the farmers take it out and we do deepening right in the middle, but we miss out the catchment area and the whole series. So that is where we are now moving across. We are ensuring that this catchment area is well defined, and we are making fruit forests along these bunds that we are creating, or this catchment area that we are creating, so that there is community participation and there is something that they can take back. Next. This is something that we discussed, ma'am. We try to visit such places like there is a place here called Palkova, for which we need to travel a good 2 hours, and then by walk we need to go. We go through Parna Tiger Reserve and then we reach that particular village. And the interesting fact, an anecdote or interesting thing that happened, generally they try to give us mineral water when an officer goes there after several years. But interestingly, the cane water, the cane river water there was so much purer and so much better. It was actually purer than the mineral water there. So we had Jal Chopals there, and an interesting discussion happened. Here there is a point that I would like to bring to your notice, ma'am. What happens is when we, so there essentially the bore wells had dried up, but cane flows very close by. So when we try to talk to the PHE as to ensure that why the river water is not being provided to the village, so we can only provide treated water and we cannot provide untreated water, is what the mandate says or the law says in terms of the PHE department's point was that we'll now then have to put up a treatment plant over there. So that is some kind of a policy or decision where we need to see when the river itself is much purer, can we just connect it through a drain, and especially for drinking water, because we have nehers for agriculture purpose, but for drinking water is something we need to see. Next. Ma'am, we are partnering with Niti Aayog, and we have taken up desilting of nearly 168 lakes here. And here we have an NGO which is working with us to mobilize the farmers to take the desilted mud away and use it in their farm. So this is something we are working on. In this, we realized policy, something which happened is when we said 168 lakes, there were 168 different lakes that were decided. But on ground, we realized some lakes were much bigger and we needed to merge. So we took them as 10 units in one place and we started planning on them. That was the intervention. Next. I'm under the Jal Jeevan Mission, and under Nal Jal Yojana, we are planning to provide piped drinking water to 2.69 lakh households in Chhatarpur. There are some challenges we are having where we are having some difficulties with the source and some issues with water allocation, which we are working with the Water Resources Department. Next. The Honorable PM in his in the program in Chhatarpur actually on 29th March announced that we will be taking up 75 Amrit Sarovars in Azadi Ke Amrit Mahotsav. So that decision was made, or the announcement was made from Chhatarpur during his address here in a Pradhan Mantri Awas program. So with respect to that, we've taken up 90 new ponds which are being constructed, 90 new lakes we are planning to construct, and work is already ongoing in 65.
the rest also underway. Next. And these are some issues which I said that you had actually mentioned in one of the locations where everywhere we go, we realize that since water is depleting, the farmers encroach upon the land and they start agriculture. So we realized demarcation of lakes and water bodies by the revenue department. The first step and updation of the land records is the most important thing that we need to do. Yeah, one of the places we realized where we are standing and where the farmer claimed was his land, it was clearly written poker, and poker in the local language means talab. So I just learned that word during that visit. So essentially, ma'am, updating it in revenue records actually changes the whole dimension. We are also now started an initiative where we are putting up chanda stones. We realize where forest and revenue land is demarcated through some these stones, these huge stones. So we want to do that in the lakes as well. We want some stones which are defining the lakes so that farmers don't encroach upon it. We also discussed on the fruit forests or plantations previously. Defining catchment areas are the biggest takeaway. We realized that not just scooping a bowl right in the middle of the lake, but we need to ensure that this catchment area is well defined so that water lakes here. Convergence is one of the major important things that we realize on working with these. Continuous contour trenches. We are working with several schemes, maybe Manrega, IWMP, all of these schemes, and we realize stopping water at multiple levels is the need of the hour. So we're now working on continuous contour trenches on the hills. Then we also need to ensure that the silt that we remove doesn't come back. So we are having silting traps, so gabion structures, and then we are also working on made bandhans, which are where we ensure that there are water retaining structures that are created all along the line. That's it from us, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Sandeep. Normally, I sort of reserve my comments for the end, but since you have to leave, excellent presentation. I think you touched upon multiple issues. One of the issues was where you talked about urban planning and the fact that the way urban planning is going is reducing water retention and water recharge. So given that you have multiple urban local bodies in your district, is there a way in which in the process of creating those master plans you can integrate the now there are the Ministry of Housing and Urban Affairs has actually issued guidance documents for integrating water recharge into the master planning process. So you could take a look at that and try and see how far you can take that in your district. That would be actually quite useful. The Sure, ma'am. second question that I wanted to, I have three questions. Is Atal Bhujal Yojana being implemented in your district? I know Yes, it ma'am. is. It is. So just there, the village water security plan is key to the implementation of that program. So I will request you to visit some of those villages and figure out whether the water security plans are actually participatory documents, right? Sure. So try and see how that approach is working, because it is a pilot. If it works well in your district, if it works well in the other areas, then we can extend it to the other parts of the country. The third question is, you talked about the Chandel tanks, and the approach is very sound. But do you also have bowlies or step wells in your area? We do, ma'am. We do. But the focus was more on these lakes, so we have more of these Obviously. lakes than these barleys. But I would also request you to map the bowlies and see how they can be restored. Thank you so much. Please, Thank you. Shobikji, let's carry on. Yes, yes. Thank you so much, Mr. Sandeep Ji, our District Minister Chhatarpur from the state of Madhya Pradesh, for an enlightening and insightful presentation. And as Debashree ma'am has said, that a lot of things being done and a lot of things can be done in the future as well. Thank you so much. With this, we move to the other important state of the country. We move to the state of Uttar Pradesh, and we have with us Mr. Sanjay K. Khatri, District Magistrate of the Prayagraj district. We welcome Mr. Sanjay. Thank you so much for your time. Over to you, sir.
Yeah, thank you. This is संजय खत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज। एक्चुअल मैं रहने वाला राजस्थान का हूँ और पश्चिमी राजस्थान का हूँ। तो हम लोगों ने बचपन में फीमेल्स को अपने सर पे घड़ा बहुत दूर से 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से लाते देखा है। और हमारे यहाँ पर पहले बहुत पहले से टांका जो वाटर रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए टांका बनता था। और अभी मैं जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स का देख रहा हूँ तो वो चीज़ हम देख रहे हैं कि पहले की तरह वो मेंटेन नहीं होता है। और जो टांका होता था, हम जितना वाटर बारिश का होता था, छत का जितना पानी होता था उसको सारे को इकट्ठा करते थे। तो सच प्रैक्टिसेस वी हैव सीन कि किस तरीके से हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करते थे और पानी का एफिशिएंट यूज करते थे। नाउ आई विल कम एट माय प्रेजेंटेशन। फर्स्ट स्लाइड, I think you share our slide, my slide. Yes, we have the slides. We're just playing on the screen, sir. Suraj, can we have the presentation on screen, please? प्रयागराज का जो पॉपुलेशन है अभी अराउंड ये 70 lakhs के अबव है। और जो प्रयागराज फेमस है Just a वो minute. संगम गंगा। Shobik ji, the presentation is not visible. Yes. Is it visible for other people? No. Ma'am, just a second. It's being put on the screen. Just a second. Yes, yes, ma'am. I think I may start. हमारा जो पॉपुलेशन Okay, है अराउंड Sanjay, 70 start. lakhs है। या और प्रयागराज फेमस है, संगम के लिए फेमस है। और पर डे जो नॉर्मल है 20-30 thousand पीपल यहाँ पर संगम स्नान के लिए रेगुलर आते हैं। और माघ मेला और कुंभ मेला, माघ मेला हर वर्ष होता है, अर्ध कुंभ हर छठे वर्ष पे होता है और 12वें वर्ष पे यहाँ कुंभ होता है। और हमारे यहाँ टोटल जो ब्लॉक्स है 23 है। और इनमें से एक जो यमुना पार का एरिया है वो प्लेटू एरिया है, रॉकी एरिया है। और हमारे यहाँ पे अराउंड 200 विलेजेस है जहाँ पर ईयर फ्लड प्रॉन एरिया है। और अराउंड मोर देन 1 लाख की पॉपुलेशन वो पर ईयर हमारी फ्लड से अफेक्टेड होती है। और इस पे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी काफ़ी हेल्प भी करता है उनको रिहेबिलिट करने के लिए। जो ग्राउंड वाटर लेवल का डेटा हम लोग देखें प्रयागराज का 2015 से अब तक का और 2021 तक का, तो हम देखें कि प्री मॉनसून 15 में हमारा जो वाटर लेवल था वो 7.91 डेप्थ पे हमें पानी मिलता था और अभी ये है 7.43 पे। और पोस्ट मॉनसून पे उस समय का 2015 का जो डेटा है तो वाटर डेप्थ था 7.33 और अभी है 6.3 पे। तो वी कैन सी दैट कि वाटर लेवल 1 मीटर इंक्रीज हुआ है। और वो बहुत सारी प्रैक्टिसेस लास्ट हम 6-7 ईयर से कर रहे हैं, तो उन्हीं सारी वजह से ये वाटर लेवल इम्प्रूव हुआ है। और एक्चुअली ये होता है कि पीपल आर शेड ऑफ देयर लीडर्स। तो जो अब हमारे जो लीडर्स हैं वाटर कंजर्वेशन पे काफ़ी सेंसिटिव है, तो इस पे हमने काफ़ी वर्क किया है। और ये जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है इसके जो मुख्य कारण है वो है स्प्रेडिंग बेसिन्स हैं, रिचार्ज पिट्स हैं, डिचेज हैं, रिचार्ज वेल्स हैं, सब सरफेस डैम्स हैं, फार्म पॉन्ड्स हैं, चेक डैम्स हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ का वाटर लेवल काफ़ी इंक्रीज हुआ है। हमारा 2017 में ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स 2 थे और अब केवल एक ही ब्लॉक है हमारा जो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। और क्रिटिकल ब्लॉक्स हमारे 4 हुआ करते थे, अब क्रिटिकल ब्लॉक्स हमारे केवल 3 हैं। तो हम देखें कि प्रयागराज में वाटर लेवल में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रेजेंटेशन शायद नहीं शो कर पा रहे हैं, यहाँ से कर पाओगे? I think, sir, there are some technical issues being uploaded, it's still showing being uploaded. I think there's some issues related to the size of the presentation, maybe. अच्छा, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, अगर शेयर कर सके तो हम लोग। Sure, sure, sir. Sure, sure. There's a share button in on the bottom of your screen, sir. You can just try to play it from there.
कर पा रहे हो? लो सुन करके देखो। हाँ, नेक्स्ट। Is it visible now? I think it's coming on screen, sir. Yeah. You can now put it Okay, on full so screen, next, sir. water sector initiative पे आ जाओ। Uh, अरे Sanjay ji, you can put it on full screen also, and it will come, sir. Yes. next water sector initiatives, next या वाटर सेक्टर में जो हमारे यहाँ के इनिशिएटिव्स हैं, सबसे पहला है आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स एंड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम लोगों ने जितने हमारे 300 स्क्वायर मीटर से बड़े जितनी बिल्डिंग्स है, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट का जीओ भी है कि उनमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी है। तो हमने जितने हमारे स्कूल्स थे या हॉस्पिटल्स थे, जो बड़ी बिल्डिंग्स थी, वहाँ हम लोगों ने जब ये इम्प्लीमेंट किया और वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट विजिबल था सारे बड़ी बिल्डिंग्स में, वो था कि पहले वाटर लॉगिंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन अब इन सारा जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ कहीं पर भी वाटर लॉगिंग का कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और नो डाउट कि वाटर लेवल और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वो तो है ही है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे टोटल 7 एसटीपीज हैं और उनका कैपेसिटी 268 mld है। तो इतना वाटर हम पर डे रिसाइकल कर रहे हैं, और बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी हम लोगों ने लिए, और स्काडा से हम लोगों का इन सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनका मॉनिटरिंग भी होता है। सॉइल कंजर्वेशन पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया, और माइक्रो इरिगेशन 10 इयर्स बैक बहुत कम हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं इससे जो मोटिवेटेड हैं और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। वाटर बजटिंग की बात करें तो एक मैं झांसी में सीडीओ हुआ करता था, वहाँ पर मौरानीपुर में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जिसपे वाटर बजटिंग से पब्लिक में अवेयरनेस कैसे लाई जाए इस पर काम करते थे। तो वो बाल्टी के माध्यम से बताते थे कि गांव में पूरा मैप बना के कि हमारे इतने घर है, इतना जो एग्रीकल्चर फील्ड है, तो कितना पानी हम लोग बाल्टी के हिसाब से एक्सप्लॉइट करते हैं और वास्तव में हम सेव कितना करते हैं। तो लोगों को बताते थे कि हमारा जो पानी नीचे जा रहा है, लेवल नीचे जा रहा है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत बहुत अच्छे से समझाते थे। मुझे लग रहा है कि और इस तरह की जो है प्रोग्राम्स हैं, हम यहाँ पर भी अभी राष्ट्रीय जल और पब्लिक की अवेयरनेस के बिना मुझे लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट जल जीवन मिशन, इसका जो बेस्ट पार्ट है अभी कि पहले हम लोग वाटर कनेक्शन नहीं देते थे। जनरली वाटर सप्लाई स्कीम बनने के बाद, क्योंकि घर के ही पास हैंडपंप मौजूद है, तो कोई भी 2000 4000 6000 रुपया खर्च करके वाटर टैप लाइन का कनेक्शन नहीं लेता था। लेकिन इस बार जल जीवन मिशन में फोकस है हमारा कि हर हाउस होल्ड को वाटर टैप लाइन कनेक्शन मिले, और इस पे काफ़ी अच्छा वर्क भी किया है, और हम लोगों ने अराउंड 70,000 के आसपास कनेक्शंस रूरल एरियाज में दिए भी हैं। स्मृति वाटिका हम लोगों ने हमारे जो शहीद है उनके नाम से अराउंड 69 वाटिकाएं बनाई हैं, और वो पब्लिक और वो उनके परिवार के लोग उनको मेंटेन करते हैं। फॉरेस्टेशन पे काफ़ी काम हुआ है। नेक्स्ट ये कुछ हम लोगों ने जो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का काम किया, उसकी कुछ फोटोग्राफ्स है। हम लोगों ने 481 पॉन्ड्स का रेजुविनेशन किया, जीर्णोद्धार किया है लास्ट 2 इयर्स में, और बहुत सारे हम लोगों ने चेक डैम्स भी बनाए हैं। 332 हम लोगों ने चेक डैम्स बनाए हैं, और इससे हमारा जो वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, और इससे जो इनपुट कॉस्ट है किसान का, वो काफ़ी कम हुआ है, और इसी से जो हमारा खेती किसानी है वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। हमने 2 डैम्स का भी जो हमारे नाले या छोटी नदियां थी, उन पर हम लोगों ने
बनाए हैं। एक गोलरिया डैम है जिसका कैपेसिटी 9.3 MCM है और इससे हम 2180 हेक्टेयर में इरिगेशन भी कर रहे हैं। और एक है बछारा डैम है और जिसका कैपेसिटी 7.4 MCM है और इससे हम 1586 हेक्टेयर का इरिगेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा फिशरीज को हम लोगों ने, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी काफी इम्पोर्टेंट इसका रोल है, तो हम लोगों ने 33 पॉन्ड्स को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम में और 14 पॉन्ड्स हम लोगों ने राष्ट्रीय कृषि विकास स्कीम में कंस्ट्रक्शन किया है और काफी लोगों को हम लोगों ने इनके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। ये कुछ फोटोग्राफ्स है। जो आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम लोगों ने 480 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स पर बनाए हैं और जिसका मैंने बताया भी था कि जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम था वो तो हुआ है, उसके अलावा हम लोगों ने क्वालिटी को इम्प्रूव किया और बहुत सारा वाटर भी हार्वेस्ट किया है, वाटर का कंजर्वेशन किया। ये कुछ उसकी फोटोग्राफ्स है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर 7 STPs है और जो मैंने पहले भी बताया, और उसका जो टोटल कैपेसिटी है 268 MLD है। इनको सारों को हम लोग, इनका जितना भी डिस्चार्ज है, इनका जो भी डिस्चार्ज है और इनका जो आउटपुट है उसको हम लोग स्काडा से मॉनिटर भी कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी को भी देख रहे हैं। और गंगा जी में हमारा जितना नाला था, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट 2 to 3 years में हम जितना भी है अनटैप्ड नाला है उनको सारों को टैप करके और पानी रिसाइकल करने के बाद ही गंगा जी में इसको प्रवाहित करें। अभी 18 + 5 23 नालों को टैपिंग का काम हमारा स्टार्ट है और विद इन 1 year हम लोग इस पर भी अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन का काम भी काफी बेहतर हुआ है। फार्म पॉन्ड पे हम लोगों ने काफी काम किया, जिससे हम लोगों ने 149 फार्म पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन किया है और इसका जो वो है बेनिफिट है कि वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हुआ और इसके माध्यम से जो किसानों का जो इनपुट कॉस्ट है वो उसमें काफी कमी आया है और उन एरियाज में जहां कभी खेती नहीं होता था वहां पर अब वेजिटेबल्स का खेती भी किया जा रहा है। नेक्स्ट, कैनल्स डैमेज होने से बहुत सारा हमारा जो वाटर है वो बहुत बेकार जाता है, वेस्ट होता है। तो इसको ठीक करने के लिए और इसको रोकने के लिए हम लोगों ने कैनल का लाइनिंग शुरू किया है और इसके माध्यम से जो बेनिफिट्स हैं आपके सामने कि सीपेज काफी रिड्यूस हुआ, हमारा वाटर लॉगिंग का जो प्रॉब्लम वो खत्म हो गया है, हमारा जो कमांड एरिया है कैनल का उसमें काफी इंक्रीज हुआ है और फाइनली जो हमारा एग्रीकल्चर है वो प्रॉफिट मेकिंग भी बना इससे। माइक्रो इरिगेशन, आज से 10 years बैक मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते थे, लेकिन अब माइक्रो इरिगेशन में हमने यहाँ पर 542 हेक्टेयर एरिया में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ये सारा गवर्नमेंट असिस्टेंस से ही हुआ है और इसका जो किसानों ने इनको किया है उनका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी कराते हैं। जो हमारे किसान हैं उनको ले जाते हैं कि ऐसे जो फील्ड है और ऐसे किसान हैं जो मोटिवेटेड हैं, तो उनसे इंटरेक्शन के बाद इससे लोग काफी अवेयर होते हैं और इस पे हमारा काफी रुझान बढ़ भी रहा है। और इस वर्ष भी हमने काफी बड़ा एरिया लिया है जिसको हम गवर्नमेंट की असिस्टेंस से माइक्रो इरिगेशन के लिए हम किसानों को सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वाटर बजटिंग, इस पे हमने पहले भी बात किया कि मऊरानीपुर में काफी अच्छा इस पर वर्क हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट केवल 2 ही जगह थे पूरे इंडिया में और उसका जो आउटपुट था, उसकी जो स्टडी थी, उसका मुझे लग रहा है कि काफी बेनिफिट हमारे पूरी कंट्री के लिए हो सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि उसके जो आउटपुट थे, आउटकम्स थे, उस पर अगर फोकस करें, उस पे हर चीज को हम लोगों ने शामिल किया था कि हम लोगों का एग्रीकल्चर है या चेक डैम्स है, हमारा मनरेगा में जो स्कीम्स है, हमारा किस तरह का लोकल
जरूरत के अकॉर्डिंग किस तरह का सीड यूज किया जाएगा, बहुत सारी चीजों को शामिल किया था। इन सारी चीज के बाद में लोगों को कैसे अवेयर किया जाए वाटर बजटिंग के माध्यम से, इस पर काफी काम हुआ था, तो दैट विल बी हेल्पफुल। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। जल जीवन मिशन का मैंने बात किया था, और जल जीवन मिशन में इस बार हम लोग 77,438 लोगों को अब तक कनेक्शंस प्रोवाइड कर चुके हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो है 95,000 के अराउंड पॉपुलेशन को वाटर टैप लाइन कनेक्शन देने का है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हम लोगों ने 69 स्मृति वाटिकाएं बनाई जो शहीदों के नाम से है, और वहाँ लोकल लोगों को ही हम लोगों ने मोटिवेट किया है कि वो शहीद के नाम पे जो प्लांटेशन साइट्स है उनको मेंटेन करें। और आप बताना चाहूंगा, ये लास्ट ईयर हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था, और यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट है वो सर्वाइवल रेट मोर देन 85% है, और इनको हम इस ईयर में मनरेगा पार्क के तौर पे भी डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट। अच्छा, एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया था कि 2019 में हम लोगों ने एक लिम्का रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में हम लोगों का रिकॉर्ड दर्ज है 9 अगस्त 2019 का, कि इस पे हम लोगों ने हाईएस्ट प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट। ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो प्लांटेशन की, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब भी है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, सीडीओ साहब है, मैं स्वयं हूँ। तो ये हम लोगों ने जो प्लांटेशन का जो एक्टिविटीज किया है उन पर है। वाटर नेशनल वाटर मिशन के तहत जल शक्ति मिशन में हम लोग जो वर्क कर रहे हैं उस पे जल चौपाल, क्विज कंपटीशन, नुक्कड़ नाटक, ओथ, वॉल पेंटिंग, लेक्चर्स आदि एक्टिविटीज को कर रहे हो। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों से जो पब्लिक में अवेयरनेस आएगा, तो जो हमारा कैच द रेन जो प्रोजेक्ट है और राष्ट्रीय जल मिशन है, अब वास्तव में उसके उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू। नमस्कार। Thank you so much. Am I audible? You're audible, sir. You're audible. Thank you so much for your detailed presentation, I must say, on various initiatives being undertaken in your district in terms of water management. And you said that your personal experience also, as you belong to Rajasthan, how it has also inspired you to make a difference when you're working in the state of UP for water conservation. Thank you so much, Mr. Sanjay Khatri, District Minister of Prayagraj, for joining us today and sharing your thoughts. So, from the state of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, now we move to the northeast, the beautiful state of Assam. And for that, we have with us Ditimoni Pegu. He is the CEO of Majuli Zila Parishad. We welcome Ditimoni Pegu. Thank you so much for joining us today, ma'am. Over to you. We'll play the presentation from here, and you can stay next, and we can keep on changing the slides. Over to you, ma'am. Thank you. A very good evening to our Additional Secretary, Madam, other esteemed members present in today's participation, and other viewers from all parts of our country. I'm very glad to make the presentation from Majuli District Administration. Myself, Ditimoni Pegu, SS Assam Civil Cadre, and I'm presently serving as the CEO, Majuli Zila Parishad. And now I would like to run the PPT, and I would request Mr. Souvik Goswami to kindly play the PPT from your end. So yes, ma'am. this is, yeah, am I audible, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is the map of our Majuli district. As all of you, we are aware that Majuli happens to be the world's largest river island situated in Assam. We have a square kilometer of around 703.16 square kilometer and a population of around 203,000 only. And Majuli is separated from the mainland, and it is surrounded from all parts by the mighty Brahmaputra, except one part been recently connected through roads. So now I would, next slide may be shown, please. So as you are aware, it was earlier in our Jorhat district, having a population of around 2.2 lakhs to 81 numbers as per the census collected. Now, as you know that we are separated by the Majuli Brahmaputra river from the mainland. So can I shift to the next slide, please? Next. This is the data. Next, please.
Next. So in Majuli district, though it is a very small district cut out from the original Jorhat district, we have been taking initiatives through our line departments, line departs in various fields regarding water conservation and preservation. In this major site, our departments that have been assisting us are the agriculture department, the irrigation department, and the public health department. And in a greater part, I would like to mention the PNRD department is also playing a greater role in water conservation. Please, the next slide. Next slide. So one of the major initiatives taken up by the agriculture department is the summer paddy. Summer paddy that has been taken up. It is basically a red rice which is highly protein content and which can be grown submerged underwater also. This is a major bioconservation that has been taken up in our district. Next slide, please. These are also the floating gardens that have been taken up by the agriculture department in our district. All plantation, nursery, etc. are taken up in a in a bamboo raised platform to prevent it from getting submerged and also to conserve the water conservation. Next slide. These are photographs. So under PNRD department, we have been taking many schemes under MGNRGA. So many schemes have been taken up under water conservation and rainwater harvesting. Next slide, please. Watershed development has been also taken up. Next, please. Then intensive afforestation works also have been taken up. From last year onwards, we have been taking up schemes. Taking us under Chief Minister's new initiative, just in the way we are making plantations of chandan, agar, and som plantations, which are economically viable as well as that helps in maintenance of biodiversity as well. Next slide, please. Next slide. And under Honorable Chief Minister's project, we have been also taking up many fishery schemes, which will also help the women folk, SHG groups in nurturing fisheries, and it will also help us in generating employment. And we have also taken up many reclamation activities where the wetlands that have been abandoned are again, the siltations have been removed so that water can be channelized and taken to the paddy ground in the drought season. See, in the winters where the ground level used to go down and the crops definitely face a little bit of scarcity of water, through these reclamation activities we provide water to the cultivation site, as well as during those season when there is not much crop in the field, the animals like cows, goats, etc. that loiter, which are not getting proper water, they quench their thirst in these wetlands. And above that, these wetlands are also a major tourist target because it invites migratory birds from other countries during seasonally. It has become a hot tourist spot for bird lovers. Next slide, please. And in our district, the Public Health Engineering Department has been taking major streams, like they have been providing individual household latrines so that people abandon the process of open defecation system, which leads to major health issue. And above, the JJM has been intensively intensified in our district, and we are present in the topmost position in our state in covering up JJM. And during JJM activities, we have created mass awareness through women and SHGs regarding hand wash hygiene, prevention and storage of water, misuse of water, especially the bathrooms and kitchen waters are to be minimized, and optimum use has to be done in order to make them learn about water conservation. Though Majuli is a district where there is abundance of rainfall, and so far we haven't faced a scarcity of water. However, the practice has been introduced to them so that in near future, if there is a situation of scarcity, so that the people can combat with it. And other initiatives like grey water management and fecal sludge management are also in our list for taking up as new initiatives. Next slide, please. And again, to mention here that our district is highly arsenic affected. Around 138 habitats are identified as arsenic affected. For this, the department has been intensely taking up activities in order to mitigate this critical situation. And filtration activities, because most of the waters are now we are drawing it from the surface water sources. Therefore, the process of filtration, etc., are in abundance taken up by our PHE department.
Next slide, please. And Soil Conservation Department also has been taking up many integrated wetland development project. In this wetland development project, we are removing the silt that has been accumulated and the water containing capacity has been increased, so that in winter, when there is dry season, the water can be channelized and provided to our irrigating farmers, so that they have a good crop. And above that, the animals also can get sufficient drinking water during the dry season that starts from November to say around March. Next slide, please. These are photographs. Next slide, please. Next slide, please. Next, sir, please. Next slide. And now we have a new major initiative that is called Amar Majuli, which has been introduced by our Honorable Deputy Commissioner. This is his pet project. In this project, the main objective of our district administration is that we make a very intimate discussion with all our farmers. We around 800 to 1,000 farmers are called, given the know-how on major agricultural views, and free counseling is given to them regarding latest agricultural policies, the insurance policies, etc., and technology also, so that they can breed a better, they can bring about a better crops by thereby increasing the economy of the rural economy. Next slide, please. Next slide, sir. Then in all our activities, we have been involving NGOs like Paribesh Bandhu, who are always aware in the field and generating awareness among the mass public regarding sanitation, hygiene, water conservation, agriculture, etc. Next slide, please. Next, women participation here. Next. Thank you, sir. I have given a presentation from Majuli. Thank all of you for allowing me to speak on this. Thank you so much, sir. Thank you so much, Ditimoni Pegu, CEO of Majuli Zila Parishad, Assam. Thank you, sir. Might be your district might be new, but the idea of Amman Majuli actually heralds of a big and brighter future for your district as well when it comes to community participation for water management. Thank you so much for joining us today. And with this, we move to a very specialized institute. We have a new aspect today in this knowledge sharing platform. We have with us Mr. Vivek Bhatt. He's a technical director of MP Water Land and Management Institute, popularly known as WALMI. It's a nodal institute to assess various water-related issues, research and technology development as well. But what it actually does, for that we have to hear Mr. Vivek Bhatt. Over to you, sir. If you can unmute your mic, sir. Thanks a lot. And I thank all the organizers for giving me this opportunity to share my presentation. Should I share it from my side only? Okay, thanks. In fact, this presentation was to be made by my director, but due to some reasons, she is not able to come. So I'll be presenting this. This presentation is regarding the training efforts in अभी हम अटल भूजल योजना में मध्य प्रदेश में जो किया जा रहा था उसमें this is regarding those training efforts what we have done in last 5 months. We have done intensive training and we have got very good results on field also. Next, please. This is a brief introduction about WALMI. It was established in 1984 under USAID project, and in 1998 this was the only WALMI which was transferred to Rural Development Department. Since then we are dealing in all aspects of water resource, natural resource management, including water, land, soil, even and environment. Next, please. Our key functional areas: training, research, consultancy and advisory functions, extension and transfer of technology, training, design and conduction, and feasibility and evaluation studies. Next, please. Our key functional domains are: we are working in irrigation management, that is command area management, watershed management, that is rainfed area management, livelihood issues, because water management is closely related to livelihood issues, regional planning, goal-oriented project planning, research and development in water management, and GIS and remote sensing activities, of course, that we are doing. Next, please.
दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट जो हम लोगों ने रिसेंटली अटल भूजल योजना में हम लोगों ने जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था, फील्ड लेवल ट्रेनिंग, उसमें है. इनफैक्ट इन से स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स अप टू मार्च हम लोगों ने इतनी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज किया था. These are we organized 660 in 667 gram panchayats in 4 phases. We organized about 2700 training programs in 5 months. Next, please. This इसमें शायद ऊपर से कुछ कवर हो गया. This is the role which was given to MP WALMI under Atal Bhujal योजना. हमको ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का कंप्लीट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ था. Thus, we had an opportunity to provide literacy and create awareness on water in 67 village panchayats in 9 blocks of 6 districts. एक्चुअली इसमें मतलब ये काफी एक इंटेंसिव प्रोग्राम था. और चूंकि वाल्मी is an institute which is based at Bhopal, and we had to conduct this field level training program. उसके बारे में आगे पूरा मैं इसमें बताने वाला हूँ. It was not only gram panchayats, we also organized programs at district level, block level, and as well as gram panchayat level. In these programs, we trained more than 18,000 participants at gram panchayat level in a period of 5 months, totaling more than 72,000 training days. Because हम लोगों ने 4 phases में ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया था. एंड through them about more than 8 lakh people were connected with campaign for improving water availability in these village panchayats. Next please. Actually the strategy was in the time was very short. We had very little amount. मैंने जो फील्ड लेवल पे इतने प्रोग्राम्स करने के लिए बजट वाज भी काफी लिमिटेड था. But then and we have limited faculty. Then the strategy was कि हम लोगों ने जो रिसोर्स पर्सन थे वो हमारे एम्पेनल पूल, हम लोग वी हैव एम्पेनल काफी हमने रिसोर्स एम्पेनलमेंट करके रखा हुआ. हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रन करते हैं लगातार, जिसमें काफी यूथ्स को हम लोगों ने इन्वॉल्व करके रखा है. हमारे पुराने ट्रेनिंग हम लोग जल मित्र का एक प्रोग्राम भी चलाते थे. जल मित्र वाज ए प्रोग्राम इन विच बिकॉज व्हाट वी हम लोगों ने ये देखा कि नॉर्मली फील्ड लेवल पे पानी की स्कैर्सिटी है, लोग उसको इम्प्रूव करना भी चाह रहे हैं, और बिना लोगों को जोड़े हुए वाटर मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन सक्सेसफुली एट फील्ड लेवल. तो इसमें ये देखा कि सब कुछ उनकी इच्छा वगैरह होने के बावजूद भी द प्रॉब्लम इज कि उनके पास कुछ टेक्निकल नो हाउ नहीं है, टेक्निकल मैन पावर नहीं है, और टेक्निकल असिस्टेंस एट फील्ड लेवल इजीली सुलभता से नहीं है. तो इसलिए हम लोगों ने पहले एक जल मित्र प्रोग्राम वाल्मी चलाई करती थी अपने रिसोर्सेज से. इट वाज उसको वाल्मी का CSR एक्टिविटी आप समझ सकते हैं. तो ये करके ऐसा करके हमारा एक पूरा एक रिसोर्स पूल है. तो हम लोगों ने उनमें से भी सिलेक्टेड सम 80 रिसोर्स पर्सन वी डिप्लॉयड. हमने उनका ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स किया. एंड इसमें ट्रेनिंग सिलेक्शन में इस बात का ध्यान रखा गया था कि नॉर्मली हम यूथ को सिलेक्ट करें, और उस एरिया के जो लोग, जो खासकर बुंदेलखंड एरिया के लोग हों, उन लोगों को इसमें एसोसिएट किया जाए, ताकि वो लोग वहाँ की एक तो प्रॉब्लम समझते हैं, दूसरा जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं बाद में फर्दर हैंड होल्डिंग में भी उन लोगों का हम यूज कर सकें. तो इसलिए दैट इज व्हाई दिस अप्रोच वाज टेकन. एंड इस तरीके से हमने 37 ट्रेनिंग टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की थी. वी कंडक्टेड ट्रेनिंग लगातार 5 महीने तक. मतलब एक पंचायत में ट्रेनिंग करते थे, नेक्स्ट डे वो कहीं मूव करते थे. दैट वे दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज डन. एंड दिस वाज इसका क्लोज मॉनिटरिंग हमने काफी था. 6 हमारे सुपरवाइजर से एंड फील्ड कंसल्टेंट से. रियल टाइम रिपोर्टिंग था थ्रू जियोटेक फोटोग्राफ्स से हम लोग रियल टाइम रिपोर्टिंग किया करते थे. नेक्स्ट प्लीज. दिस वॉज द हम लोगों ने उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 फेजेस में किए गए थे. सबसे इसमें मजे की बात ये थी कि इसमें हमने फर्स्ट फेज में जो लोग थे, 4 फेज में इट वाज ए डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज कि 4 फेज में हमको मोस्ट ऑफ द
जिसको फेज 1 ट्रेनिंग मिल गई है, हम ये था कि उन्हीं को फेज 2 ट्रेनिंग मिले और उन्हीं को फेज 3 और उन्हीं को फेज 4, बट इट वाज हर ट्रेनिंग प्रोग्राम सेकंड फेज में फर्स्ट फेज में जो नॉलेज दिया गया था उस पर वो बिल्टअप होता था, इस तरीके से प्रोग्राम किया था। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम ये जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे वहाँ पे, जो हमारी VWSC के मेंबर्स थे, बाकी वहाँ पर जो अलग अलग कमिटीज वगैरह थे उनके मेंबर्स थे, और प्लस कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स और ये लोग भी थे। हमारे लिए चैलेंज ये था कि पहली ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो लोग आए वो उन्हीं को नेक्स्ट प्रोग्राम में भी अगर उसमें से उनको आना था और उन्हीं लोगों को आगे के प्रोग्राम्स में आना था। तो दिस वाज अ चैलेंजिंग थिंग बिकॉज ट्रेनिंग में नॉर्मली ऐसे ऐसे लोगों पे जिस पे हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं, उनको इन्वॉल्व करने काफी मुश्किल टास्क था। हम लोगों ने अलग अलग रिसोर्स पर बड़ा सिंपल जो उनको इजीली ग्रास्प हो जाए इस तरह के हमने गए थे, जो जिसमें क्लोज कोऑर्डिनेशन विद SPMU, जो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट अटल भूजल योजना, उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम रीडिंग मटेरियल वगैरह डेवलप किए थे। नेक्स्ट प्लीज। देन वी कंडक्टेड दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग। इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो राइट में आप जैसे फोटो देख रहे हैं, इसमें ट्रेनिंग की क्वालिटी इम्पैक्ट ना हो इसलिए हम लोगों ने जो हमारे जो रिसोर्स पर्सन जैसे दो लोगों की टीम बनाई थी, वो उनको वहां पर साइट पे पहुंच मैंने ट्रेनिंग वेन्यू पर पहुंचकर उन लोगों को अपना जियो टैग फोटोग्राफ देना पड़ता है लगातार। उनकी फिर ट्रेनिंग में तो मिड टर्म बीच में भी फोटोग्राफ और लास्ट में भी उनको ग्रुप फोटो वगैरह ऐसा डालना होता है। दिस इज हाउ ये पूरा रहा। इसके साथ में हमारे यहाँ से हमारे कुछ सुपरवाइजर थे जो हर 4 या 5 टीम पे सुपरवाइजर्स थे, एंड वो लोग सब उसमें कनेक्ट करते रहते थे और उसमें वो जो वहाँ पे उनके जो भी इश्यूज थे उनको सॉल्व करते रहते थे। एंड सबसे ऊपर हमारा एक 6 इंच के ऊपर हम एक फील्ड लेवल रिसोर्स पर्सन थे, डॉक्टर संजय सिंह साहब, ही वाज देयर। नेक्स्ट प्लीज। दीज आर द इस तरीके से हम लोगों ने पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए। इसमें लगभग जो हमारी फीमेल एक अच्छी बात यह है कि इसमें फीमेल पार्टिसिपेंट्स का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा, एंड वो अबाउट 70% हमारी उसमें फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें एक बात और थी कि जो हमने इसमें यूथ को इन्वॉल्व किया था, एक यहाँ पे ट्रेनिंग तो जो थी वो थी ही, उसी के साथ में हम लोगों ने अबाउट 5500 मैंडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने 5 महीनों में यूथ को लिए क्रिएट किया था, जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स थे। और ये लोग चूंकि अनएम्प्लॉयड थे फिलहाल, तो उनको एक वाटर सेक्टर में काम करने का एक मौका, एक ये अपॉर्चुनिटी मिली, और उसमें काफ़ी कुछ आशा है कि इसमें काफ़ी लोग काफ़ी मास्टर ट्रेनर्स विल कंटिन्यू इन वाटर सेक्टर। नेक्स्ट प्लीज। इसका इम्पैक्ट ट्रेनिंग का एक तो नॉर्मली ये रहा था कि इसमें ट्रेनिंग में हमारे यहाँ जो हम किया जाता है, फर्स्ट वो ट्रेनिंग हुआ वो सुन के फिर बाद में उसको आगे फर्दर यूज होगा कि नहीं। बट एज वी नो कि बुंदेलखंड एरियाज में देयर इज लॉट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, तो वहाँ पर इस ट्रेनिंग का हमको एक बड़ा विजिबल इम्पैक्ट देखने में। इसमें हम लोग हमारी एक स्ट्रेटेजी ये भी थी कि पहली ट्रेनिंग के बाद में चूंकि उन्हीं लोगों को बुलाना, तो फर्स्ट ट्रेनिंग में तो हमें नॉमिनेशन में काफ़ी कुछ हमें दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद में एक जो म्यूचुअल रेपो बन गया था। हमारे इतनी जगह हमारे हर कुछ पंचायतों पे हमारी जो टीम वहाँ पर जो जाके काम करने लग गई थी, तो इनसे एक टेक्निकल एक रेपो टाइप का बन गया था। तो उसमें नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में इट वाज वेरी इजी, और इसके बीच में भी 2 ट्रेनिंग के बीच की गैप में भी विलेजर्स इनसे कांटेक्ट वगैरह करते रहते थे, और उसमें काफ़ी करके उसमें इन लोगों ने बाद में हैंड होल्डिंग सपोर्ट काफ़ी किया। उसके कारण this could be we were able, this turned out to be a campaign for water conservation in that area, जिसमें आगे हम अभी देखते हैं। इसमें वाटर बजट जो बनाया गया था विलेजर्स ने वाटर बजट उनके द्वारा बना, जैसा अभी मैडम ने बताया था कि VWSC में चूंकि इट इज ए पीपल्स डॉक्यूमेंट, और पीपल डॉक्यूमेंट में पार्टिसिपेशन और एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। तो इस ट्रेनिंग के उसमें काफी इम्पैक्ट रहा, और जो बाद में अभी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक मिशन भी आया था, वर्ल्ड बैंक मिशन का भी इसमें एक ये फीडबैक था कि देयर हैज बीन ए गुड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन प्रिपरेशन ऑफ दीज प्लान्स. A cadre has been prepared for increasing community participation in water conservation in village पंचायत. चूंकि ये सारे लोग वहीं पे विलेज में ही रहने वाले हैं,
और इन लोगों को 3-4 चरण के और आगे भी जो ट्रेनिंग देना है, अगर हम फेज 5 फेज 6 इस साल भी जो 4 फेजेस में ट्रेनिंग देंगे, तो वी वुड हम लोग इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि चूंकि वही लोग रहे, तो इसमें फायदा ये है कि एक हर गांव में कुछ 10-15-20 लोगों का एक ऐसा कैडर तैयार हो जाए कि जिसको पानी की समझ है, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर इसमें आगे इसको मिटिगेट करने में, वाटर स्केर्सिटी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में काफी यूजफुल रहेगा. Then water conservation works have been started by village panchayat in line with the water bid. सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे उनको समझ में आया और उसके बाद में जो उनको जो बजटिंग वाला जो कंसेप्ट आया, हम लोगों ने ट्रेनिंग में मतलब वाटर बजट में उन लोगों से बनवाया, वाटर बजट बनवाए थे, एक्सरसाइजेस करवाई थी, तो उन लोगों को काफी एक समझ डेवलप हुई थी. तो उन लोगों ने कुछ वाटर कंजर्वेशन वर्ड्स कुछ लोगों ने अपने देव स्टार्टेड ऑन देयर ओन, अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जेंस एंड ऑल दिस जो गवर्नमेंट इसमें जो हमारा गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो तो ही, बट लोगों ने खुद अपने इनिशिएटिव करके बिना खुद के पैसों से भी अपने खेतों वगैरह में उन्होंने काफी काम किए हैं. तो देन इसमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. इसमें हम लोगों ने कोशिश ये किया था, चूंकि 667 विलेज पंचायत थी और उसमें कई जगह जो रिस्पांस मिल रहा था हमें लोगों से ट्रेनिंग में, उससे देखिए काफी अंदर, तो हम लोगों ने सोचा कि पहले ऑन एन एवरेज हमको कुछ 100 ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे उनको हमको फर्दर हैंड होल्डिंग देके और उसमें वो कुछ बेहतर काम कर पाए. लेकिन बाद में लगभग 50 ग्राम पंचायतें आई, हमारा टारगेट 100 का था, लेकिन 50 ग्राम पंचायतों में काफी इसमें काम किया और उसमें जो जहाँ पे अनुकरणीय काम है, जहाँ पे काम को उनको काफी देखा जा सकता है और दे वर इफेक्टिव. The participant develop an understanding about the meaning and processes of water conservation and management to be set up at village panchayat level. And women participation का जो था इन ट्रेनिंग्स में, it was up to 40% था. And it started efforts by community started their efforts to make their village water sufficient की दिशा में इन्हें कुछ सोचना शुरू किया, काम करना शुरू किया. And in some of the village panchayats, the community in their villages उन लोगों ने कुछ सोखता गड्ढा वगैरह और बाकी कुछ स्ट्रक्चर जो खेतों वगैरह में उन्होंने काफी काम किए. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. इसके बाद में कुछ ये जो हमारी फील्ड टीम थी, इन लोगों ने डेटा दी कि ये पिछले 4-5 महीनों में कुछ इतने काम हुए हैं. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. हम लोगों ने इसके पूरा केस स्टडीज का कंपाइलेशन किया, एक बुक पब्लिश किया था. इसमें लगभग 35 केस स्टडीज हैव बीन प्रेजेंटेड. नेक्स्ट प्लीज. ये ड्यू टू कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट दिस टर्न इनटू वाटर कंजर्वेशन मॉनिटरिंग कैंपेन. 6 रिवर वॉक्स फिर उसमें वहां पर ये ऑर्गेनाइज लोगों ने ये किए थे. और अभी मतलब अभी भी वहाँ पे कुछ श्रमदान वगैरह का इन लोगों ने खुद किया था. वर्ल्ड वाटर डे वगैरह पे भी इन लोगों ने सबने मिलकर कुछ काम किए थे. इसमें 6 रिवर्स में इन लोगों ने कुछ काम किया है. नेक्स्ट प्लीज. ये सब देखते हुए एक्चुअली इसमें हमने ये देखा कि दिस ऑल हैज बीन टर्न इनटू अ मूवमेंट, और जिसको हम आगे अगर हम काम करेंगे ये हमारे लिए काफी यूजफुल रहेगा. इसके अलावा ये अभी वाल्मी में हम लोगों ने कुछ, ये लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, इसमें हम लोगों ने कुछ और मैडम जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स अभी हमें जरूरत ये है कि ये जो हमको वाटर कंजर्वेशन जो करना है उसमें हमको ऐसी कुछ टेक्निक्स करनी चाहिए जो कि एक तो मास स्केल पे किया जा सके, और जिसमें अगर कोई कॉमन आदमी अगर उसको करे तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल इश्यूज ना रहे कि जिसके इम्पैक्ट में भी हमको कोई ऐसे ना रहे. तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें. हम लोगों ने एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक अभी डेवलप की है जिसको हमने NIH से काफी उसका वेटिंग भी करवाया है, और ये हाउ मच इट इज इफेक्टिव, ये इसमें कुछ नहीं है as such. मतलब इसमें मैंने हमारे Mr. Bhatt, if you don't mind, if you can conclude, because some of the officers will be leaving, so if you can conclude in a minute or so. Okay. So this is a typical ये ऑगर, एक हमने ऑगर होल ये कंस्ट्रक्शन किया था. यू कैन सी ये एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन
ये ट्रैक्टर से एक ऑगर किया था, इसके अंदर फिल्टर, सिंपल फिल्टर मीडिया डाल के, और इसमें जहां पर भी हमारा पानी इकट्ठा होता है, भी स्कूल के मैदान या हमारे जहाँ पर पानी वेस्ट हो रहा है, इवन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में भी हम जो बात कर रहे थे, एक इस तरह हमने कुछ ओवर होल्स बनाए थे। एंड नेक्स्ट प्लीज। इनकी कॉस्ट लगभग 200 से 500 रुपए से ज्यादा इनकी कॉस्ट नहीं है। 1 से 2 घंटे में ओवरऑल पूरा कंस्ट्रक्ट हो जाता है। और इसमें अभी हम लोग NIH से हम लोगों ने कुछ इसका पूरा स्टडी करता है इम्पैक्ट। आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें ओवरऑल से स्टेबलाइजेशन के बाद में हमारा इन्फिल्ट्रेशन रेट इसमें कितना काफी बढ़ जाता है। इट इज अबाउट, जो हमारा 20 के लगभग हो रहा था, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इट रोज टू अबाउट 200 mm 200 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट प्लीज, लास्ट स्लाइड। इसमें इस टेक्नोलॉजी में वी वर एबल टू प्रोवाइड, मतलब इसमें आप ये देखेंगे कि जो इसमें अराउंड 60 to 70 टाइम्स फ्रॉम द सेम सरफेस एरिया, दैट इज 1 फुट डायमीटर का जो एरिया है, उस डायमीटर से हम लोग इसमें जो वहां से जो पानी जाता था उसमें हम लगभग 60 से 70 टाइम्स फास्टर हम पानी का रिचार्ज कर पाए। दिस हैज बीन ए वेरी सक्सेसफुल टेक्निक। नेक्स्ट प्लीज, दिस इज लास्ट स्लाइड। इसको हम लोगों ने कई जगह ऐसा यूज किया है, जो और इसमें हमको इम्पैक्ट भी, हमारे कैंपस में भी काफी इम्पैक्ट मिला। हम लोगों ने ऐसे कुछ परफोरेटेड पाथवेज बनाए, इन्हीं के नीचे ऑगर होल्स हैं। तो यहाँ से हमारे जो इम्परवियस, जैसा अभी हमारे DM छतरपुर सर ने कहा था कि इम्परवियस जो सरफेस हो रहा है, ये उसके, दिस इज गुड सॉल्यूशन फॉर दैट। आप ऊपर देखेंगे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में भी अगर कुछ थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शन करके ऐसे ऑगर होल सीरीज में अगर बना दिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन में, तो उसमें दीज आर वेरी, इनका काफी अच्छा इम्पैक्ट है इसमें। इन ओवरऑल दिस इज ए वेरी चीप ऑल्टरनेटिव, हमको इसमें काफी हुआ है। इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे और किए हैं, जिसको हम आगे और आफ्टर प्रॉपर साइंटिफिक टेस्टिंग वी आर गोइंग टू लॉन्च इट। थैंक यू। आई थिंक दिस वाज द लास्ट स्लाइड। Thank you so much, Sri Vivek Bhatt, Technical Director of MP Water and Land Management Institute, Bhopal, for sharing some light on the technical aspects and how you're making an impact in terms of water management. Thank you so much. With this, without taking much time, I'll hand over the session to Debashree Mukherjee ma'am for her final remarks on the presentations presented today. Over to you, ma'am. Thank you very much, Abhijit. Thank you, Sanjay. Thank you, Ditimoni, and thank you, Mr. Bhatt. Just to quickly respond to what Mr. Bhatt said, particularly with regard, I see the WALMIs as our key partners in terms of providing support to district administration as well as the implementing agencies for technical as well as community mobilization. So the work that you've done on training is very valuable. What I request you to do is this auger hole that you were talking about. Can you send us a technical note that we can then look at and possibly share with the state nodal officers for the Jal Shakti Abhiyan, so that we can see whether it can be utilized in other areas as well. Sure. Sanjay, thank you very much for your presentation. I found a number of issues very interesting, particularly the holistic way that you're looking at the overall water management issue. So, and both you and Ditimoni spoke of employment generation. Actually, to sustain the initiatives that we take under the Jal Shakti Abhiyan, we need to continuously think about how to, sort of ensure that people have a stake in managing the water bodies. People have a stake in keeping the water bodies going. So that is critical. I just want to flag 2 or 3 things to both of you. One is, I hope both districts have created their water conservation and recharge plans, so that you have a shelf of projects going forward. I found that very interesting when I was talking to a couple of people from Gujarat. So they have very methodically created a water recharge and conservation plan for the district and prioritized those blocks and areas which have greater water problems. So you start with, more resources going to those to start with. You have a shelf of projects, and as you complete, maybe after 5 years, you then rework on the next edition of the plan. And this needs to become a regular process for the district.
Their resources are available under the National Water Mission to create these GIS enabled plans. So I encourage, if you have not done it already, I encourage the district to actually do this planning process. The other thing that I'd request you people to do is, one is that we're creating new structures, but the other is that, can we have a public movement to ensure that the existing structures are cleaned, repaired, ready for the rains? Because frequently we keep building new, and in government buildings particularly, the old structures deteriorate. So that is something that in the next 1 month we are ready to catch the rain. The third thing that I say at the end of every session is, can you document your work? I mean, we have a representative of WALMI here, but also with your local universities, departments, get a third party to document your work and share it with us, so that we can amplify the work that you're doing. So interesting efforts, interesting before and after stories would be very, very useful for getting other people getting other people enthusiastic about water conservation. Thank you very much, and I will stop here. Thanks a lot. And actually, we are using these sessions very, as I said before, we are sharing it with the academy also to train other officers. So thank you for participating. Thank you so much, sir. Thank you so much, Debashree Mukherjee, Thank you. Additional Secretary and MD of National Water Mission, Mr. Thank Dalshat you Kumar, all. Thank you all. for your input, for your guidance, for your insights, and also a big thank to Mr. Sanjay Khatri, Ditimoni Pegu, Vivek Bhatt, and Sandeep GR for joining us today. And as ma'am was saying, that this kind of knowledge sharing platform actually help us to get points, to note down points, to document those points, so that when we make plans for future, we actually incorporate all those points to make a better future. On this note, we end this edition of this Kazrin Campaign Series webinar here. But do join us for the 34th edition next Saturday. But next Saturday, the talk will be done with not with the DMs, but with the smart city commissioners. So I think we are planning in such a way that alternate Saturdays we will be having discussion with the district magistrates, and alternate Saturdays with the smart city commissioners. Thank you so much. Do your bit to save water, to conserve water for a better and brighter future. Thank you so much. Do join us for the next edition. Goodbye. Take care.